Hello everyone, welcome to Score High. I'm Arshita Agarwal and in our history optional lecture series, part 1 subpart E, today we'll be discussing about foreign accounts. In the earlier lectures we have discussed about the regional literature, about numismatics and so on. And in this lecture we'll be discussing about the foreign accounts. Now, Alexander has left detailed historical and geographical accounts of his invasion, and this has helped in understanding the geography of the age and also clearly built Indian chronology. This also tells us in detail about the social conditions like sati, sale of girls by poor parents and so on. तो अलेक्जेंडर ने जो भी इन्वेड किया जब इंडिया को, उसका डिटेल्ड हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल अकाउंट छोड़ा कि किस समय पे वो आया और तब क्या सिचुएशन थी. Now, Justin tells us about the accession of Chandragupta Maurya when he overran Indus. The literature also frequently mentions the autonomous towns in the northwest, indicating continuation of the Gana Sanghas. तो जस्टिन बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब एक्सेशन किया था तब क्या सिचुएशन थी. Now, Herodotus' works have some useful information about India, but it also has many myths. Similarly, much of Theseus' work is just full of myths. तो हेरोडोटस भी काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है इंडिया के बारे में, पर ज़्यादातर उसमें मिथ है जो मतलब था नहीं एग्जैक्टली जो माना जाता था. नो बीइंग फॉरेनर्स, तो वो क्योंकि फॉरेनर्स थे तो वो इंडिया के कल्चर को बेसिकली नहीं जानते थे, तो आधी चीज़ तो वो ओवरलुक कर जाते थे. तो उनकी जो राइटिंग्स थी, इट लैक्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडिया. द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इट टेल्स अस अबाउट वेरियस इंडियन पोर्ट्स लाइक नौर, टोंडी, मोचीरी एंड नेल्सिडा, the imports and exports, other cities and the economic life in general, and this is very useful under the Satavahanas and the Sangam chiefs. तो ये बताता है सातवाहना और संगम के एज में क्या सिचुएशन थी. Now first we will be discussing about Megasthenes. Now about the politics, he tells us that Patliputra administration, it was divided into 6 committees. तो जो administration था वो 6 committees में डिवाइड था, जिसमें 5 मेंबर्स हर कमेटी में थे. नो वो सब क्या देखते थे? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स, वेट्स और मेजर्स को रेगुलेट करना, सैनिटेशन को देखना, टोल कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज. इवन ड्यूरिंग दैट टाइम जो चीज़ें आज के टाइम पे हो रही हैं वो चलती थी. एंड ही ऑल्सो टेल्स अस दैट पांड्यास वर रूल्ड बाय अ वुमेन. सो दिस वाज अबाउट पॉलिटिक्स. About military, he tells us that Chandragupta Maurya's army was administered by 6 committees of 5 members each, looking after infantry, cavalry, chariots, elephants, navy and transport. He indicates that soldiers as one of the seven castes, which indicates their importance in the society and presence of a large standing army. तो जो कास्ट थे 7 कास्ट में से एक सोल्जर्स थे, तो ये उनकी इंपॉर्टेंस दिखाता है. इकोनॉमी, he tells us that for tax assessment land was measured as in Egypt, and the state officials also monitored irrigation channels for the use of water. तो वाटर का यूज तब भी मॉनिटर किया जाता था. Now trade with panchayats in south from where pearls were imported. About culture, तो मैग्निफिसेंट पैलेस था चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में, जिसके रिमेन्स हमें मिले हैं कुम्रहार इन पटना. इट वॉज एन 80 पिलर्ड पैलेस बट नॉट एज मैग्निफिसेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थनीज. About society, he talks about existence of 7 castes in India. They were philosophers, peasants, shepherds, counselors, warriors, supervisors, artisans and craftsmen. तो ये 7 कास्ट थे. स्लेवरी एब्सेंट थी, बट कह सकते हैं कि मेगास्थनीज डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था स्लेव्स और शूद्रास के बीच में, क्योंकि उसे आइडिया नहीं था. नो चंद्रगुप्त मौर्य के फीमेल बॉडीगार्ड्स थे, तब भी विमेन की क्या इंपॉर्टेंस थी इससे पता चलता है, और वो
फीमेल अकाउंटेंट स्टेट सर्विस में. So this was all about Megasthenes' account. Then we have the Roman accounts. So first is Natural History by Pliny. It tells us about the strength of Chandragupta Maurya's army. There were around 600,000 infantry, 30,000 cavalry and 9,000 elephants. So it was a large standing army. Satavahanas के टाइम में 100,000 infantry, 2,000 cavalry and 1,000 elephants and about 30 walled towns in their kingdom. तो जो kingdom थे मान लो ये इसके आसपास wall थी. On the Indo-Roman trade, he complains that Rome was being drained of her wealth due to the trade. Ships in the Sangam age, where he says Indian ships were 75 tons. फ्लोरा और फौना के बारे में बताता है, मिनरल्स, ज्योग्राफी, इन सब के बारे में. नेक्स्ट वी हैव द अरब अकाउंट्स. फर्स्ट वी हैव सुलेमान. ही टेल्स अबाउट द पावरफुल आर्मी ऑफ द पाला रूलर्स एंड कॉल्स हिज आर्मी द बिगेस्ट. देन वी हैव अल-मसूदी. He testifies about the great power and prestige of the Pratihara rulers and vastness of their empire. Now, king की आर्मी के पास it had 4 divisions, one fighting north versus Multan, one west with Muslims, one east with Palas and one south with Rashtrakutas. But Pratiharas had no access to the sea, so had lost Gujarat to Rashtrakutas. तो बेसिकली हम ये भी देख सकते हैं किस टाइम पे वो कंटेम्प्रेरी थे. सुलेमान था ड्यूरिंग पाला रूलर्स, अल-मसूदी प्रतिहारा. नेक्स्ट वी हैव द चाइनीज अकाउंट्स. Now, even though works of Huayan, Hunsang and Ipsing throw much light on life in their times, they suffer from the drawback that the writers were all Buddhist monks. So obviously सब Buddhist monks थे तो वो उसी हिसाब से देखेंगे. So thus they not only fail to take an unbiased view but also fail to write about secular aspects of life क्योंकि they only believed in Buddhism. Now, फाहियान बताता है हमें कि अनटचेबल्स भी वो एक क्लैपर यूज करते थे. तो जब स्ट्रीट में घुसते थे उससे पहले वो क्लैपर बजाते थे ताकि वो लोगों को बता सके कि वो आने वाले हैं. और अगर कोई भी अनटचेबल किसी पर्सन के जो किसी कास्ट को बिलोंग करते उसके पास आ जाता था, उस पर्सन को कोई रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था. नाउ ह्यूनसैंग बताता है अबाउट फिशरमैन, बुचर्स, थिएट्रिकल परफॉर्मर्स, एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स कि इन सबको सिटी के बाहर रहना था. And their houses were marked so that they could be avoided. उनके घर पे भी marks थे. Now, next we have, now here G is for Greek and C is for Chinese. कौन से ऑथर ने या जो भी इंडिया में ट्रैवलर था उसने क्या बुक लिखी है और क्या सब्जेक्ट था. मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका and it provides valuable information on administration and socio-economic of modern India. Ptolemy इसने geography पे लिखी है about geographical treatise on India in the 2nd century AD. Pliny ने Naturalis Historia, it talks about the trade relations between Rome and India in the 1st century AD. फिर Periplus of Erythracy, it records personal voyage of Indian coast in 80 AD. Next we have Fahiyan. It has a record of the Buddhist countries and records the Gupta Empire in the 5th century AD. Hunsang book is Buddhist records of the Western world. It describes the social, economic and religious conditions of India in the 5th and 7th century AD. Then we have Itsing, a record of the Buddhist religion as practiced in India and Malay archipelago. Studies the Gupta period and under Sri Gupta in the 7th century AD. And finally we have Yu Li. It talks about life of Hunsang, the accounts of Hunsang's travel in India. So these were all the authors and their books and the subject matter. So this was all for this lecture. In the other lecture, we will be discussing about pre and proto-history. Please rate, review and follow. Thank you so much.